Assalamu alaikum everyone. Today we are here with the topic of PESTEL analysis, and today we are going to discuss what PESTEL analysis is and how it helps the organizations to get a broader view of the environment they are deployed in, and further helps them to potentially overcome the hindrances that comes along the uh, journey of any organization. But before moving on, let's take a look at what we discussed in the previous lectures. In the previous lectures we talked about what strategic management is and how it helps an organization to define its goals and objectives and later on help them achieve it. Next we discussed about the core idea of what competitive advantage is and how it is based on the idea of core competency, and how both of these ideas further help an organization to challenge their potential competitors within the market and sustain themselves in the relevant industry. Next we discussed about the idea of the strategic management process in detail by further relating it to the relevant aspects of it and the relevant dimensions of it, and we further translated the strategic management process in the vision and mission statement, and how both of these statements act as a strategic compass for the associated employees to achieve their organizational goals and objectives. And lastly we discussed about SWOT analysis and how it helps an organization to realize its potential strengths and weaknesses, and at the same time realize the potential opportunities that are in the environment they are working in, and as well as the associated threats to it. So today our lecture is basically divided into two different parts. In the first part we will be discussing about the PESTEL analysis and all the related dimensions of it, and nextly we will be discussing about what are the key success factors that can help an organization to move forward. सो कमिंग बैक टू द कोर टॉपिक ऑफ टुडे, हमारे पास आज यहाँ पे अगर हम बात करें पेस्टल एनालिसिस की, तो पेस्टल एनालिसिस की जो डिफरेंट डायमेंशंस हैं जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर अफेक्ट करती हैं व्हेन इट इज़ डिप्लॉयड इन एनी सर्टेन एनवायरनमेंट, तो उसमें आपकी सबसे पहले जो होती हैं टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स होते हैं, जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स होती हैं या रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो एक ऑर्गेनाइजेशन को किस तरह अफेक्ट करती हैं. नेक्स्ट वन आर द इकोनॉमिक कंडीशंस इन विच एन ऑर्गेनाइजेशन इज वर्किंग. फर्दर इज द सोशल एस्पेक्ट ऑफ इट, व्हाट इज द सोशल एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ the services or products you are making and how they are being impacted. Next one is the environmental aspect of it, that how much the environmental concerns are related to your business. Further are the legal aspects, and इसमें आप देखते हैं कि आप को कौन कौन से लीगल एस्पेक्ट्स जो हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन को जो है अफेक्ट कर रहे हैं, और फर्दर जो है आपको कौन कौन सी चीज़ें इनटू कंसिडरेशन लेनी चाहिए to make yourself more abidable to the law. Lastly we have the political influence. Definitely जिस environment में भी आप काम करते हैं उसमें different influences होते हैं जो हमने अभी डिस्कस किए हैं. उसमें से बहुत एक इम्पॉर्टेंट होता है political influence, क्योंकि जितनी उस रीजन की political stability ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा आपके लिए आसान होगा बिजनेस करना वहाँ पे. इन सारे एस्पेक्ट्स को हम फर्दर डिटेल में देख लेते हैं. तो अगर हम बात कर लें सबसे पहले अपने पॉलिटिकल एस्पेक्ट ऑफ द पेस्टल एनालिसिस, उसमें सबसे पहले आपके पास आ जाता है गवर्नमेंट टाइप एंड स्टेबिलिटी. इट इज़ वेरी अंडरस्टूड थिंग कि जब भी आप किसी रीजन में जो है बिज़नेस करने जा रहे होते हो तो वहाँ पे आप जो है गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी को हमेशा मद्देनज़र रखते हो. जितनी ज़्यादा किसी भी कंट्री की या रीजन की जो है गवर्नमेंट स्टेबल होगी उतना ही वो उसकी जो पॉलिसीज़ हैं वो इम्प्लीमेंटेबल रहेंगी, ठीक है, और उतना ही ज़्यादा एक जो है हेल्दी इन्वायरमेंट मिलेगा किसी भी बिज़नेस को ग्रो करने के लिए, किसी प्रोस्पेक्ट एंटरप्रेन्योर को अपना बिज़नेस वहाँ पे डिप्लॉय करने के लिए. सो इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट दैट द गवर्नमेंट स्टेबिलिटी इज़ देयर. नेक्स्ट वन इज़ द फ्रीडम ऑफ प्रेस, रूल ऑफ law and levels of bureaucracy and corruption. Freedom of press is very much important because the press keeps all the stakeholders associated to potential businesses informed
ठीक है। काफ़ी जो आपकी इंफॉर्मेशन फ्लो होती है डिफरेंट स्टेक होल्डर्स में, उसका में एक प्रेस का जो होता है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है उन चीज़ों को हाईलाइट करने का सोसाइटी में, या डिफरेंट जो स्टेक होल्डर्स हैं आइदर दे बिलोंग टू डिफरेंट गवर्नमेंटल बॉडीज़ और प्राइवेट बॉडीज़ और इंडिपेंडेंट बॉडीज़ इफ़ आई मे से, तो उन तक सही एक फॉर्मल वे में जो इन्फॉर्मेशन का पहुंचना है और टाइमली पहुंचना है, उसमें डेफिनेटली प्रेस का जो होता है एक बहुत बड़ा रोल होता है। सो दैट्स वाई एक फ्री इन्वायरमेंट फॉर द प्रेस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, ताकि जो है अगर कोई जो है अनलॉफुल एक्टिविटी हो भी रही हो तो वो हाईलाइट हो उस सोसाइटी के अंदर और उसको एड्रेस किया जाए। और डेफिनेटली जितने ज़्यादा ऐसे इश्यूज़ को हाईलाइट और एड्रेस किया जाएगा उतने ही ज़्यादा लोग दे विल बी प्रॉबल टू फॉलो द लॉ। नेक्स्ट वन हेयर इज़ द रूल ऑफ लॉ। सो रूल ऑफ लॉ इज़ डेफिनेटली वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप कोई इंफॉर्मेशन पहुंचा देते हैं टू द राइटफुल बॉडीज़, उसके बाद जो उनकी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ है दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, कि जो आपने रूल्स बनाए हैं उनको फॉलो कितना किया जा रहा है। अगर रूल ऑफ लॉ स्ट्रॉन्ग होगा तो डेफिनेटली जितने भी एंटिटीज़ एक सोसाइटी के अंदर ऑपरेट कर रहे होंगे उनको अपनी लिमिटेशंस का पता होगा। और likewise the bureaucracy and corruption are very much related to it. The more the press will have freedom and the more rule of law is there, the less corruption or the immoral bureaucracy will be there. Next one we have here is the regulation and deregulation trends. So definitely जितनी भी आपकी एंटिटीज़ बिजनेस से एसोसिएटेड होती हैं, गवर्नमेंट से एसोसिएटेड होती हों, जितनी ज़्यादा रेगुलेटेड हों, अंडर लॉ चल रही हों, उतना ही ज़्यादा एक किसी भी बिज़नेस के लिए ट्रस्ट जो है अटेन करना जो होता है ईजी होता है और मेंटेन रखना उसको ईजी होता है। सो डेफिनेटली द रेगुलेशन ऑफ द एंटिटीज दैट आर ऑपरेटिंग इन अ सोसाइटी इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट वन वी हैव हियर इज़ द सोशल एंड एम्प्लॉयमेंट लेजिस्लेशन। डेफिनेटली जब आप कोई एक बिज़नेस किसी सोसाइटी में डिप्लॉय कर रहे होते हो तो वहाँ पे उससे एसोसिएटेड आपने ये देखना होता है कि कोई जो इर्द गिर्द की सोसाइटी है वो तो अफेक्ट नहीं हो रही। जिस तरह अगर हम अपनी केमिकल इंडस्ट्रीज़ की बात कर लें या ऐसी इंडस्ट्रीज जिससे पोल्यूशन जनरेट होती है, तो ये बाय लॉज होते हैं कि आपने जो उससे आबादी है उसको प्रोटेक्ट रखना है। तो वो सोशल एस्पेक्ट ऑफ जो इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट है उसको हम फर्दर डिस्कस करेंगे आगे जाके, लेकिन यहाँ पे जो सोशल एस्पेक्ट है, जो सोशल सिक्योरिटी का एक कॉन्सेप्ट है एसोसिएटेड टू डिफरेंट बिजनेसेस, तो वो यहाँ पे जस्टिफाई होता है। लाइकवाइज जो आपके एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनके जो मिनिमम वेजेस सेट करने होते हैं या जो मैक्सिमम वर्क आवर्स आपने सेट करने होते हैं, दो शुड आल्सो बी लेजिस्लेटेड वंस, ठीक है, ताकि उनको उनके कंप्लीट राइट्स मिलें। नेक्स्ट वन इज़ द टैक्स पॉलिसी एंड ट्रेड एंड टैरिफ कंट्रोल। सो डेफिनेटली political influence plays a pivotal role when it comes to taxing, ठीक है। उसमें अपने बिजनेसेस को राइटफुल टैक्स करना होता है, बहुत हैवी टैक्सेस या हैवी ड्यूटीज़ भी नहीं अप्लाई करनी होती हैं उनके ऊपर कि वो डिस्करेज हों लोग उन बिजनेसेस के थ्रू। और एट द सेम टाइम आपने जो है इलीगल जो ट्रेड होता है उसको भी मिटिगेट करना होता है एज मच एज पॉसिबल। नेक्स्ट वन जो मैं अभी बात कर रहा था, जो इन्वायरमेंटल कंसर्न्स होते हैं, इन्वायरमेंटल एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन लेजिस्लेशन, ठीक है। तो जो आप जिस एरिया में भी अपना बिजनेस डिप्लॉय कर रहे होते हो उसमें जो इन्वायरमेंटल राइट्स हैं या इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन दैट इज़ नेसेसरी, दैट शुड आल्सो बी टेकन इनटू कंसिडरेशन एंड इट कैन वेरी वेल बी इम्प्लीमेंटेड इफ़ वी हैव द राइट पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ओवर देयर। और एट द सेम टाइम जो कंज्यूमर्स होते हैं जो आपका प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहे होते हैं उनके भी डेफिनेटली राइट्स होते हैं कि कहीं आप उनको ऐसा प्रोडक्ट तो नहीं दे रहे कि जो उनकी हेल्थ को हार्म कर रहा हो या अदरवाइज़ जो उन्होंने प्राइस पे की है वो जस्टिफाइड ना हो। तो ये इन सारी चीज़ों को लेजिस्लेट करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए जो है पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इज़ वेरी मच नेसेसरी, and the more political influence is there in the right way, not in the wrong direction,
कि वो करप्शन को इनकरेज कर रहा हो, बट इन द राइट वे, जहाँ पे सारी चीज़ें लॉफुली हो रही हों। तो ये किसी भी एक चाहे वो इंटरनेशनल बिजनेस बॉडी हो या नेशनल लेवल पे किसी ने बिजनेस जो है स्टार्ट करना हो, तो वो काफ़ी ज़्यादा इनकरेज होता है व्हेन ही और शी सीज कि यहाँ पे जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिटिकल influence है that is in the right position. The last one we have here is the likely changes in the political environment. तो definitely ये हमने स्टार्ट में जो बात की थी अबाउट द गवर्नमेंट स्टेबिलिटी, सो डेफिनेटली जो पॉलिटिकल पावर या पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है वो कितना ज़्यादा इनकरेजिंग है और कितना ज़्यादा स्टेबल है, और इवन कि अगर वो एक ही गवर्नमेंट चल रही है तो उन्हीं के अंदर जो उनकी डिसीजन मेकिंग है वो कितनी ज़्यादा स्टेबल है। ये तो नहीं है कहीं कि वो आए दिन जो है डिफरेंट एंड डिफरेंट डिसीजंस जो हैं वो ट्राई आउट कर रहे हों और वो एक अनसर्टन सिचुएशन क्रिएट कर दें जो भी बिजनेसेस वहाँ पे इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं उनके लिए। सो दिस इज़ इट फॉर द पॉलिटिकल एस्पेक्ट ऑफ पेस्टल एनालिसिस। नेक्स्ट वी हैव हियर इज़ द इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ पेस्टल एनालिसिस। उसमें सबसे पहले आपका स्टेज ऑफ बिजनेस साइकिल है कि आपको एक बिजनेस स्टेबलाइज करने के लिए या एस्टेब्लिश करने के लिए हाउ मच stages of a business cycle you have to go through. Either it's a long journey or it's a convenient process. The more convenient and the more easy it is for you to establish a business within any country, it is much better for the investment point of view. Next one we have here is the current and projected economic growth, inflation and interest rate. ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जितनी ज़्यादा आपकी इकोनॉमी स्टेबल होगी, ठीक है, और जो इंटरेस्ट रेट्स हैं और इन्फ्लेशन रेट्स आपके जो स्टेबलाइज होंगे, उतने ज़्यादा किसी भी बिज़नेस के लिए वहाँ पे डिप्लॉय होना और उसको सस्टेन रखना विद इन दैट मार्केट, दैट वुड बी मच ईजियर। अगर आप कहीं पे बिज़नेस जो है इस्टेब्लिश करते हैं और इन्फ्लेशन रेट्स उनके बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करते हैं और जो है आपके रेट्स ही नहीं सेट हो पा रहे, ठीक है, फॉर वट एवर बिजनेस यू आर डूइंग, तो उसमें आप किस तरह एक कंसिस्टेंट रेट पे अपने कस्टमर्स को जो है या एक कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर आप अपने जो है प्रोडक्ट्स या सर्विसेज प्रोवाइड करोगे टू योर कंज्यूमर्स। सो इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि आपके बिजनेस जिस भी रीजन में हो, इट शुड बी एन इकोनॉमिकली स्टेबल रीजन। Next one is the unemployment and supply of labor. Unemployment and supply of labor is very much necessary as well कि आप किसी ऐसे रीजन में जाएं जहाँ पे आप बिजनेस स्टैब्लिश कर रहे हैं और वहाँ पे ऑलरेडी कंपेटिटर्स इतने हों कि जो वहाँ पे एम्प्लॉयड लोग हैं उनके पास ऑप्शंस हों, ठीक है, कि दे कैन इजीली लीव योर ऑर्गेनाइजेशन एंड गो फॉर समबडी एल्स, ठीक है। तो इस चीज़ को भी आपने देखना होता है कि वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है और जो आपके कंपेटिटर्स हैं वो किन बेसिस पे हायरिंग कर रहे हैं। एट द सेम टाइम यू हैव टू लुक फॉर द सप्लाई ऑफ लेबर्स, ठीक है, और इसको हम फर्दर रिलेट करेंगे अपनी लेबर्स कॉस्ट के साथ कि आपके पास लेबर जो हैं वो अबंडेंस में अवेलेबल है या फिर देयर इज़ अ लिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर। और अगर आप देख लें जो यूएस के काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं, इवन वो इलेक्ट्रॉनिक्स हों या वो ब्रांडेड क्लोथ्स हों या और कोई भी उनका जो है प्रोडक्ट हो, जो मैक्सिमम उसकी जो लेबरिंग है या उसकी जो डेवलपमेंट है, ठीक है, वो आपकी होती है चाइना के अंदर, ठीक है, और उनके काफ़ी जो ब्रांडेड क्लोथ्स हैं उसकी मैन्युफैक्चरिंग आपकी होती है बांग्लादेश के अंदर इवन, ठीक है, इवन पाकिस्तान में आपकी होती है। यहाँ पे रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ पे जो है अबंडेंस ऑफ लेबर है और अबंडेंस ऑफ लेबर है और एट द सेम टाइम यहाँ पे जो लेबर कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। अगर आप यही एग्जांपल ले लें कि उनके पास यूएस में लेबर्स अवेलेबल हैं लेकिन उनके जो मिनिमम वेजेस वहाँ पे सेट हैं दैट इज़ अराउंड $7.25। तो अगर आप उसको यहाँ की लोकल करेंसी में कन्वर्ट करें सो इट वुड बी मच हायर।
तो वही चीज़ वो वहाँ पे पर आवर जो है $7.25 जो हैं उनको दे आर लाइबल टू बी पेड। और ऑन द कॉन्ट्रेरी यहाँ पे जो है आपका जो पूरा दिन का, अगर आप पाकिस्तान का जो लेबर रेट देख लें फॉर द होल डे, इट इज़ अराउंड 1500। दैट्स वाई द एस्पेक्ट ऑफ लेबर कॉस्ट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट कि उन्होंने अपनी जो सारी मैन्युफैक्चरिंग है वो इन कंट्रीज़ में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया टू कट देयर कॉस्ट। बट एट द सेम टाइम जो वहाँ की लोकल लेबर है वो इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा सफ़र होती है and they are facing other issues as well. Next one is the level of disposable income and income distribution. तो disposable income is something कि आप के जिस रीजन में आप डिप्लॉयड हो वहाँ के जो लोकल्स हैं या जो लेबर्स हैं वो जो अर्न करते हैं मंथ में, उसके बाद उनकी जो सेविंग्स हैं, ठीक है, जिनको वो डिफरेंट और एरियाज़ में यूज़ कर सकते हैं, तो वो कितनी है, ठीक है। तो अगर आप पाकिस्तान की एग्जांपल ले लो तो डिस्पोजेबल इनकम यहाँ पे मोस्टली नील होती है, बल्कि इवन इन सम केसेस माइनस में जो आ रही होती है, ठीक है। और एट द सेम टाइम जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है इसको भी आपने बहुत क्रिटिकली देखना होता है कि जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपकी स्पेसिफाइड जो टॉप 1% है सारे आपका इनकम डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसका मैक्सिमम शेयर उनकी तरफ है, या वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, या फिर एक कमेंडेबल डिस्ट्रीब्यूशन में जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है अमंग द सोसाइटी। सो इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि आप जो है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को भी अच्छी तरह देखें, बिकॉज इट इंडिकेट्स द इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ऑफ दैट रीजन, ठीक है। अगर आपकी जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है या जो आपका कैपिटल डिस्ट्रीब्यूशन है वो सारा एक स्पेसिफिक तबके ही में जाके सैचुरेट हो रहा है और जो मैक्सिमम आपकी सोसाइटी है वो सफ़र कर रही है, देन इट्स नॉट एन इकोनॉमिकली स्टेबल रीजन फॉर यू टू ऑपरेट इन। नेक्स्ट वन इज़ द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ये आपने देखना होता है, इसको हम रिलेट करते हैं फर्दर अपने टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के साथ, कि जो आपकी ग्लोबलाइजेशन है दैट द वर्ल्ड हैज़ बिकम अ ग्लोबल विलेज, इट इज़ मोस्टली बेस्ड अपॉन द टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, राइट, कि उसमें आपका कम्युनिकेशन जो है अक्रॉस द वर्ल्ड फास्ट हो गया। और तो आपने ये चीज़ ऑब्ज़र्व करनी होती है जिस एरिया में आप बिज़नेस करने जा रहे हैं वहाँ पे ग्लोबलाइजेशन की एक्सेप्टेबिलिटी कितनी ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा फैसिलिटेशन उधर आ गई हैं, that region in specific is now connected to the other countries around the world, ठीक है। so the more globalization is there, the more easier it will be for you to implement your business। और likewise जो technological acceptance है उस region की, that plays a pivotal role as well, क्योंकि जितने ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस वो रीजन होगा और जितने ज़्यादा वहाँ के लोगों के पास उस टेक्नोलॉजी का नॉलेज होगा, द मोर वाइबल इट विल बी फॉर यू टू डिप्लॉय योर बिजनेस एंड एट द सेम टाइम गेट ऑप्टिमम आउटपुट्स आउट ऑफ योर बिजनेस। क्योंकि टेक्नोलॉजी का जो कोर आइडिया होता है वो होता है कि वो आपके लिए आसानियाँ पैदा करें, और जितना ईजी आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होगा या आपका एक सर्विस डिलीवरी प्रोसेस होगा, जितनी ज़्यादा आप टेक्नोलॉजी रेलेवेंट टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे तो उतने ही ज़्यादा आपकी जो है कॉस्ट कम होंगी, ठीक है, और अल्टीमेटली इट विल हेल्प योर बिजनेस टू ग्रो। द लास्ट वन हियर इज़ द लाइकली चेंजेस इन द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इट इज़ बेसिकली द समड अप कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट वी हैव जस्ट डिस्कस्ड, कि आपकी जिस तरह हमने बात की थी कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, लाइक वाइज आपकी जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होनी चाहिए वो भी दैट शुड बी देयर एज वेल, कि आप जिस कंट्री में या जिस रीजन में बिज़नेस करने जा रहे हैं वहाँ की जो करेंसी है उसकी डिवेल्यूएशन बहुत अनसर्टन ना हो, ठीक है, और अगर वो ग्रोइंग स्टेज पे हो तो दैट इज़ ग्रेट एज वेल। उसके लिए आप किसी भी अगर डाटा देखें, टाइम सीरीज़ डाटा देखें, तो उसमें आपको किसी भी रीजन की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसके भी ग्राफ्स मिल जाते हैं कि उन्होंने पास्ट 40-50 ईयर्स में कितनी स्टेबिलिटीज़ देखी, डिस्टेबिलिटीज़ देखी हैं, और लाइकवाइज आप करेंसी को भी जज कर सकते हैं।
and there are many several factors as well, but that's the general idea of it. Next one here is the social impact of the PESTEL analysis, social aspect of the PESTEL analysis, and in this we have the cultural aspects, health consciousness, population growth rate and age distribution. तो डेफिनेटली जब आप कहीं पे बिज़नेस करें तो वहाँ के कल्चर को डेफिनेटली बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करें, और जितनी आपका प्रोडक्ट या सर्विस की कल्चरल एक्सेप्टेबिलिटी होगी उतना ज़्यादा आप रिलेट कर सकते हैं अपने पोटेंशियल कंज्यूमर के साथ। और एट द सेम टाइम आपने ये देखना होता है कि हेल्थ कॉन्शियसनेस कितनी ज़्यादा है। अगर हम डेवलप्ड कंट्रीज़ में देखें तो वहाँ पे हेल्थ कॉन्शियसनेस लेवल का जो एक स्टैंडर्ड है दैट इज़ मच हायर दैन द डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्री, so you have to mold your services up to that standard, right? Next one is the population growth rate and age and their further distribution. इसमें आपने डेमोग्राफिक्स को भी डेफिनेटली ऑब्जर्व करना होता है कि आप अगर किसी रीजन में ऑपरेट करने जा रहे हैं और अगर आपका प्रोडक्ट जो है दैट इज़ टारगेटेड फॉर द किड्स ऑफ एज 1 and 5, तो आप उस किसी भी प्रोस्पेक्ट रीजन को जज करने से पहले आप उसकी जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है उसको देखें, और एट द सेम टाइम उनकी जो डेमोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है उसको देखें कि आया उस रीजन के अंदर जो अगर आपके पास मल्टीपल चॉइसेस हैं डिफरेंट रीजन्स की, ठीक है, उसमें आप ये देखें कि किस रीजन के अंदर आपकी टारगेटेड पॉपुलेशन ज़्यादा प्रेजेंट है, ठीक है, जिस पॉपुलेशन या एक एज ब्रैकेट के अंदर आप इंटरेस्टेड हैं वो कितनी ज़्यादा प्रेजेंट है। जिस रीजन में वो ज़्यादा प्रेजेंट हो आप डेफिनेटली प्रेफर करें उसको उस रीजन में डिप्लॉय करना। और ये अभी हम बात करें सिर्फ सोशल एस्पेक्ट से, डेफिनेटली हमने बाकी सारे एस्पेक्ट्स जो होते हैं वी हैव टू टेक देम इनटू कंसिडरेशन टू मेक अ फाइनल डिसीजन, बट इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द सोशल एस्पेक्ट इन स्पेसिफिक तो उसमें दिस एग्जांपल justify our target. Next one here is the organizational culture, attitudes to work, management style, staff attitudes. तो डेफिनेटली आपने किसी भी सोशल एक्सेप्टेबिलिटी टूवर्ड्स द वर्क प्रैक्टिसेस को डेफिनेटली देखना होता है, और जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो किस तरह काम करती हैं यू हैव टू टेक दैट इनटू कंसिडरेशन। जिस तरह अगर हम जापान की एग्जांपल ले लें, सो दोज individuals are very much workaholic, and they are so much workaholic that to meet the organizational goals they even sleep in their office space through the night, ठीक है, and they start working early during the day. So this kind of practice is very much rare in the rest of the regions of the world. So considering the aspect of organizational culture and attitude towards the work and the management staff is very much important. Next one we have is the education, occupations, earning capacity, living and living standards. So it is again one of our demographical consideration, जिसमें आप देखते हैं कि जिस रीजन में आप डिप्लॉय कर रहे हो उसमें जो एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स हैं वो क्या हैं, उसमें कितनी पॉपुलेशन जो है वो आपकी एजुकेटेड है और किस लेवल की एजुकेटेड है। एट द सेम टाइम जो कॉमन ऑक्यूपेशंस इन दैट रीजन और जो लोगों की अर्निंग कैपेसिटी और जो लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं जो उस अर्निंग कैपेसिटी के साथ अलाइंड है, यू हैव टू लुक इनटू दैट। और डेफिनेटली अगर आप उनकी अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज़ करते हैं अपना बिजनेस डिप्लॉय करने से और उनके लिविंग स्टैंडर्ड्स इंक्रीज़ करते हैं, सो यू कैन earn yourself very much loyal employees. Next one is the ethical issues, diversity, immigration, ethnic, religious factors. So definitely जो आपके सोशल एस्पेक्ट्स होते हैं उसमें जो पर्सनल वैल्यूज़ होती हैं वो काफ़ी मैटर करती हैं, और उसके साथ साथ जो होते हैं उनके जो मोरल वैल्यूज़ होती हैं दैट मैटर्स अ लॉट, और उसमें एक रिलीजन को जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, ठीक है। इसकी एग्जांपल अगर आप ले रहे हैं तो जो आपकी क्लोथिंग इंडस्ट्री है अगर आप उसकी एडवर्टीज़मेंट वेस्ट में करते हैं और सेम क्लोथिंग लाइन की जो है आप एडवर्टीज़मेंट जो है पाकिस्तान में करते हैं, सो यू कैन सी अ हाई कॉन्ट्रास्ट ओवर देयर। उसमें जो रीज़न है वो बेसिकली डिफरेंस ऑफ
ethical values, difference of personal values और religious factors which are very much important to us. तो इन सारे aspects की जो होते हैं we have to take them into consideration. Next one here is the media views, law changes affecting social factors, trends, advertisements and publicity. Media has a very pivotal role in changing the minds of the people, definitely, because most of the times what we are watching we get affected by it. So definitely what is the media view of the business that you are going to deploy and how it will help you to further grow and advertise yourself, advertise your business in the market. It is very much important. Or last one is the concluding remark of the social aspect, that is about the demographics, that you have to look into the different age brackets in that society and what age bracket is in higher proportion to the other. Likewise you have to see the gender balance and the different races that are within the region you are operating, and at the last you have to see at the family size, that either the societal individuals are living in combined families or they are living separately or they are opting for more of an individualistic approach. So these are the social aspects that should be taken into consideration when we are doing the PESTEL analysis. Next one is the technological aspect of any business and that we are going to deploy. First one consideration here is the research funding, technological legislation and new discoveries. It is very much important कि जिस आप बिजनेस में स्टेप इन करने लगे हैं उसके लिए आइदर देयर आर रिसर्च फंडिंग्स अवेलेबल और एट द सेम टाइम जो टेक्नोलॉजिकल लेजिस्लेशन है या रेगुलेशन है हाउ मच इट इज़ इन प्लेस. एंड नेक्स्ट इज़ द एस्पेक्ट ऑफ न्यू डिस्कवरीज कि कितनी ज़्यादा इनोवेशन आपके बिजनेस में होती है विद द पैसेज ऑफ टाइम. अगर हम इसकी एग्जांपल ले लें प्रोग्रामिंग की, तो प्रोग्रामिंग में जो है एवरी ईयर देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ शिफ्ट इन द टेक्नोलॉजी. ठीक है, जिसकी वजह से जो लोग इंटरेस्टेड हैं आईटी बिजनेसेस के अंदर उनको अपने आप को रिलेटिवली मोर अपडेट रखना पड़ता है. एट द सेम टाइम अगर हम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की बात करें तो उसमें इनोवेशन इज़ देयर, डेफिनेटली इज़ देयर, बट द पेस इज़ relatively lower compared to the IT industry. So considering the comparison you have to see कि आप जो business करने जा रहे हैं उसमें जो आपकी innovation rate है what is that. Next one is the information technology, internet, global and local communication. So ये हमने जो already बात की थी कि जो global village है अब आपकी दुनिया जिसमें हम लोग रह रहे हैं और कम्युनिकेट कर रहे हैं अक्रॉस द ओशंस. सो व्हाट इज़ द रोल ऑफ इट इन द बिजनेस यू आर ट्राइंग टू इन्वेस्ट इन और हाउ मच क्रिटिकल इट इज़ फॉर योर बिजनेस. नेक्स्ट वन इज़ द टेक्नोलॉजिकल एक्सेस, licensing, patents, potential innovation, replacement technology and solution. So this is very much related to the legislation of the technology. और इसमें हमने लाइसेंसिंग और पेटेंट्स की बात की थी कि हाउ क्रिटिकल दे आर और जितनी ज़्यादा रेगुलेटेड और लीगली स्ट्रॉन्ग किसी भी कंट्री की या रीजन की पोजीशन होती है व्हेन इट कम्स टू लाइसेंसिंग एंड पेटेंटिंग एंड सिक्योरिंग द पोटेंशियल इनोवेशन. सो दैट इज़ a more suitable region for any business to operate in. Next one is the transportation, energy use, sources and fuel and waste removal or recycling. So definitely आपका business depending on the business type how much transportation will be required for your business. either वो logistical form में है या जो है either it is necessary for your employees or getting your supplies of raw material. So depending on the business type you have to look into
कि how much the transportation network is in place in that region. Likewise जो energy uses हैं, ठीक है, if you believe in renewable energy sources and you want to implement it for your prospect business, तो उसकी कितनी ज़्यादा कन्वीनियंस और अवेलेबिलिटी इज़ देयर इन द रीजन, ठीक है, और कितना ज़्यादा आप इफेक्टिवली उसको यूज़ कर सकते हैं, और उसके लिए आपके लिए जो सोर्सेज अवेलेबल हैं वो कितने इन प्लेस हैं. और एट द सेम टाइम if you are dealing with some kind of industry that produces waste and is damaging for the environment, तो उसको आपने देखना होता है कि how much the waste removal and cycling practices are in place for your business. Next one is the legal aspect of the PESTEL analysis. उसमें सबसे पहले आपके पास आ जाता है द करंट होम मार्केट लेजिस्लेशन एंड फ्यूचर लेजिस्लेशन. डेफिनेटली जो किसी भी आप इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रहे होंगे उसके ऊपर एक स्टेट लेवल की और गवर्नमेंटल लेवल की लेजिस्लेशन वुड बी इन प्लेस ऑलरेडी. उसके साथ साथ जो आप जिस इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रहे होते हैं उसके अपने SOPs होते हैं, उसके अपने रूल्स होते हैं बनाए हुए, एंड यू हैव टू अबाइड बाय देम एज वेल. So the more accommodating those legislations are and the more implemented those legislations are, the healthier working industry you will have to deploy yourself in. Next one is the international legislation. Definitely अगर आपका expanded network है जो कि across the borders operate कर रहा है, तो उसमें अगर आपके ऊपर international legislations भी जो हैं लागू होते हैं, so you have to abide by them as well. So you have to take into consideration that too. Next one is the regulatory bodies and processes. तो किसी भी बिजनेस को स्टैब्लिश करने के लिए जो रन हो रहा है उसको चेक एंड बैलेंस उसका मेंटेन रखने के लिए डिफरेंट रेगुलेटरी बॉडीज़ होती हैं. वो आपकी गवर्नमेंट डिफाइंड भी हो सकती हैं और वो आपकी इंडिपेंडेंट भी हो सकती हैं. सो यू हैव टू अबाइड बाय देयर लॉज. एंड the next one here is the environmental regulations, employment laws and consumer protection. इसकी हमने बात की थी इनिशियली अपने पॉलिटिकल एस्पेक्ट ऑफ पेस्टल एनालिसिस की, और वही चीज़ें फर्दर जब वो पॉलिटिकली सपोर्टेड होती हैं, तो अगर आप कोई इन्वायरमेंटल लॉज को जो है बाईपास कर रहे हो या वायलेट कर रहे हो, तो वहाँ पे आपके अगेंस्ट लीगल कार्रवाई होती है, ठीक है. लाइकवाइज अगर आप एम्प्लॉयज़ के जो है ड्यू राइट्स उनको नहीं दे रहे हैं तो दे कैन सू यू. लाइकवाइज अगर आप कंज्यूमर्स को जो है उनके राइट्स नहीं दे रहे और उनको राइटफुल जो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हैं वो नहीं पहुंचा रहे हो, तो अगेन यू कैन बी परसूड लीगली बाय दोज रेलिवेंट स्टेक होल्डर्स. नेक्स्ट वन इज़ द इंडस्ट्री स्पेसिफिक रेगुलेशंस, कंपेटिटिव रेगुलेशंस. ये हमने इनिशियली बात की थी आपकी कि जो आप करंट मार्केट में होते हैं उसके एक स्पेसिफिक रेगुलेशंस होते हैं, डिफरेंट स्टैंडर्ड्स होते हैं, वो नेशनल लेवल पे डिफाइंड होते हैं और इंटरनेशनल लेवल पे भी डिफाइंड होते हैं. सो यू हैव टू अबाइड बाय देम. फर्दर इज द एनवायरमेंटल कंसर्न. एनवायरमेंटल कंसर्न is defined upon how people's perception and reaction to environmental issues can affect a business. आप किसी भी सोसाइटी में अपना बिजनेस डिप्लॉय करते हैं, वहाँ पे आपकी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है दैट यू इफ़ यू आर टेकिंग फ्रॉम दैट सोसाइटी और इन्वायरमेंट यू शुड गिव बैक टू देम एज वेल, ठीक है, और आप उनको कोई नुकसान ना पहुँचाएं. अगर आप उनको कोई नुकसान पहुँचाते हैं और कोई इन्वायरमेंटल लॉज आप जो हैं वायलेट करते हैं, सो इट विल रिजल्ट इन लीगल परसुएंस अगेंस्ट यू. सो टेकिंग इनटू कंसिडरेशन दैट जो भी आप बिज़नेस कर रहे हैं उससे इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स क्या जनरेट हो रहे हैं. सो इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू टेक इनटू कंसिडरेशन एज वेल. सो इस तरह बेसिकली हमने देखा कि हमारे जितने भी एस्पेक्ट्स हैं वो हमारे बिजनेसेस को किस तरह जो है अफेक्ट कर सकते हैं, और जब भी हम कोई बिज़नेस फॉर्म कर रहे हों या रन कर रहे हों तो वी शुड लुक इनटू डिफरेंट डायरेक्शंस of it and different aspects of it that can potentially affect our business. So we have to take the steps at the right time to keep our business sustained in the relevant industry.
And here is the second part of our lecture today, that is about the identification of key success factors. अगर हम key success factors की बात करें तो those are the controllable variables that determine the relative success of market participants. यानी कि अगर हम अपने बिजनेस, डेफिनेटली एवरी बिजनेस वांट्स टू ग्रो, ठीक है, हर एक बिजनेस आता ही मार्केट में इस वजह से ताकि वो टाइम के साथ ग्रो करे और प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट करे। लेकिन लेकिन अगर आप देख लें तो हर बिजनेस जो है सक्सेसफुल नहीं होता, ठीक है। उसकी रीज़न क्या है कि उनकी जो अप्रोच है टूवर्ड्स देयर रेलेवेंट बिजनेस और जो एस्पेक्ट्स उनके बिजनेस को अफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो मिसअलाइंड है, ठीक है। उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है दैट यू आइडेंटिफाई द राइट एस्पेक्ट्स दैट कैन लीड योर ऑर्गेनाइजेशन टूवर्ड्स सक्सेस और आप उनको टाइमली एड्रेस करें। तो बेसिकली की सक्सेस फैक्टर्स वही सारे वेरिएबल्स होते हैं जो आपके बिजनेस से एसोसिएटेड होते हैं कि अगर आप उनको टाइमली एड्रेस कर लें और टाइमली उनका पोटेंशियल यूटिलाइज कर लें, so you can remain successful in the market. So the key success factors are the keys to unlocking the secrets of competing successfully in the market segment, that it helps you to remain competitive and maintain the advantage over your competitors. अगर हम बात कर लें कि हमारे कॉमन टाइप्स ऑफ की सक्सेस फैक्टर्स क्या होते हैं, उसमें सबसे पहले आपकी आती है बेस्ड ऑन द टेक्नोलॉजी, कि टेक्नोलॉजी की बेस पे जो है आप कितने ज़्यादा मार्केट में जो हैं यू आर अहेड ऑफ द गेम, ठीक है, और उसमें कितनी ज़्यादा रेलेवेंट टेक्नोलॉजी आपके पास अवेलेबल है और उसको आपने कितनी इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली अप्लाई किया हुआ है। नेक्स्ट वन इज़ द मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड एबिलिटी टू अचीव इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल। इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल बेसिकली हमने कई दफ़ा पहले बात की थी कि जब आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो आपके इफेक्टिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होने चाहिए जिससे आप जो है अपनी ओवरऑल जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उसको रिड्यूस कर लें। जब आप वो रिड्यूस कर लेंगे तो आप अपने कंज्यूमर को जो है लोअर प्राइसेस पे प्रोडक्ट्स जो हैं दे सकते हैं। तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि व्हेन यू गो ऑन मैस प्रोडक्शन लेवल द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ योर यूनिट प्रोडक्शन पर यूनिट decreases. So you should implement the right management and technological and technical practices that you are able to achieve the economies of scale, right? नेक्स्ट वन इज़ क्वालिटी कंट्रोल। तो आपकी क्वालिटी कंट्रोल, जब हमने क्वालिटी का पूरा लेक्चर स्टडी किया था उसमें हमने देखा था कि क्वालिटीज़ कितनी टाइप की होती हैं, कितने लेवल्स पे होती हैं, एंड हाउ मच इम्पोर्टेंट इट इज़ फॉर यू टू मेंटेन द क्वालिटी टू रिटेन योर कस्टमर। नेक्स्ट वन इज़ द हाई यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स मोस्टली आपके जो होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड होते हैं और आपके टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट्स एंड सिमिलर थिंग्स होती हैं जो आपको हेल्प करती हैं अपने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में। सो यू हैव टू यूटिलाइज देम इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। लाइकवाइज वी हैव नेक्स्ट एस्पेक्ट ऑफ हाई लेबर प्रोडक्टिविटी। जितने आपके लेबर्स उनको आप अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट देंगे और उनको मोटिवेटेड रखेंगे, उतनी प्रोबेबल चांसेस आर देयर that you get the high labor productivity. So it is very much important as well when it comes to identification of key success factors. और अगर इनमें से अगर आप कोई चीज़ लैक कर रहे हैं so you should pay your attention to it. नेक्स्ट वन इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड, जिसमें हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में बात की थी जो प्लेसमेंट थी, प्रोडक्ट प्लेसमेंट और आपकी जो सप्लाई चेन एक नेटवर्क होता है, हाउ मच इम्पोर्टेंट इट इज़ टू बी अ स्ट्रॉन्ग वन. So if you have a strong network of wholesale distribution and dealers, it is a great edge for you. Likewise the strong direct sales capabilities. Direct sales की अगर हम बात करें तो जितने ज़्यादा आपके प्रोडक्ट और आपके कंज्यूमर के बीच में मिडिल मैन आते हैं वो अपने शेयर्स कट करते हैं और उसकी वजह से जो कंज्यूमर प्राइस एट द एंड ऑफ द डे इट इंक्रीजेज. तो जितना आपका डायरेक्ट लिंक होगा एक ऑर्गेनाइजेशन का विद इट्स कंज्यूमर, the lower prices the consumer will have to pay and the direct high profits will go in the hand of the organization itself. So it is important as well that you have a direct sale capability. Next one is the ability to secure favorable display space on retailers shelf. अगर आप
जो हैं प्रोडक्ट्स जो हैं वो डिफरेंट स्टोर्स में जो हैं सेल कर रहे हैं, तो उसमें आपका प्रोडक्ट जो है वो इतना अट्रैक्टिव है कंज्यूमर के लिए कि उसकी डिमांड जो है बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा किसी भी प्रोडक्ट की जो है वो डिमांड होगी, उतनी ज़्यादा वो उन स्टोर शेल्फ्स के ऊपर जो है प्रोमिनेंटली डिस्प्लेड होगा। सो इट हेल्प्स यू टू इंक्रीज योर सेल नंबर्स। और यहाँ पे अगर आप साइकोलॉजिकली बात कर लें तो जो द डिस्प्ले स्पेस ऑन रिटेलर शेल्फ होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। जब भी आप किसी भी एक मार्ट में जाते हो शॉपिंग करने के लिए, किसी भी आप स्टोर में जाते हो, तो उसमें जो होते हैं डिफरेंट रैक्स होते हैं, 5 रैक्स 7 रैक्स। तो उसमें साइकोलॉजिकली जो स्टडीज़ हैं वो ये रिफ्लेक्ट करती हैं कि जिन प्रोडक्ट जो आपके आई लेवल पे होते हैं, ठीक है, उस पे किसी भी कंज्यूमर की जो होती है सबसे ज़्यादा निगाह जाती है। एंड देयर इज़ हाई प्रोबेबिलिटी कि वो उस ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर्स की नज़र में आएगा, और जितना ज़्यादा वो रिपीटेडली कंज्यूमर्स की नज़र में आएगा उतना ही ज़्यादा उसके सेल्स के चांसेस जो हैं वो इंक्रीज़ होंगे। सो इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट दैट यू secure a favorable display space on retailer shelves. नेक्स्ट अगर हम बात कर लें हमने की सक्सेस फैक्टर्स की इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग, सो इफ़ यू हैव अ very respectable brand name, then it will be a great edge for you. And you have to see that how much marketing techniques of yours are fast, accurate, and how much technical assistance is there, right? And accurate filing of buyers orders, and देन लास्टली प्रोवाइडिंग देम विद कस्टमर गारंटीज़ कि आप जो भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, ठीक है, वो कितना टाइमली जो है ऑर्डर प्लेसमेंट होती है उसकी, और राइटफुली जो है प्लेसमेंट होती है, और कितना फास्ट वो डिलीवर होता है, और उसके बाद जो वो प्रोडक्ट पहुंच जाता है तो आप कस्टमर गारंटीज़ जो हैं वो कितनी अश्योर करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ द एस्पेक्ट ऑफ स्किल्स एंड कैपेबिलिटीज़। उसमें सबसे पहले आपके पास आ जाता है कि अगर आपके पास जो है बहुत टैलेंटेड वर्क फोर्स है तो डेफिनेटली इट विल गिव यू एन एज ओवर योर कंपेटिटर्स, एंड इट विल प्रूव इट सेल्फ टू बी अ ग्रेट सक्सेस फैक्टर फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन। और नेक्स्ट वन इज़ द प्रोडक्ट इनोवेशन कैपेबिलिटीज़ कि उसमें आपके अगर देयर इज़ अ क्रिएटिव डिपार्टमेंट ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन एंड इट इज़ वेरी गुड एट व्हाट दे डू to bring creativity and novelty to your products and services, it will be an edge for you. Likewise, short delivery times and capabilities, जितनी जल्दी आप अपने products और services deliver करने के capable होंगे, it will be an edge for you. Next one is the strong e-commerce capabilities. Strong e-commerce capabilities are very much important when you want to expand your business across the horizons. इसमें हम डेफिनेटली अलग से ई कॉमर्स पर बात भी करेंगे, बट इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू रीच मोर एंड मोर ऑफ योर कस्टमर्स यूजिंग द इंटरनेट, राइट। आप एक लोकल लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन आपने काफ़ी अपने बिजनेसेस देखे होंगे जो बहुत स्मॉल से एक लार्ज लेवल पे गए जस्ट बिकॉज कि उन्होंने इंटरनेट की सही यूटिलाइजेशन की, एंड दे एक्सपेंडेड ऑन बेस्ड ऑन दैट। एंड लास्टली, the convenient location is very much important, because the more convenient location you will have, the more it will be easy for the consumers to reach you. Okay, when it comes to next, we have the aspect of analyzing the competitors, right? इसमें हमने ऑलरेडी अपने जो सक्सेस फैक्टर्स हैं उनकी बात कर ली कि किन किन चीज़ों में हमारे पास पॉसिबली एज हो तो हम अपने कंपेटिटर्स को compete कर सकते हैं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द वे टू एनालाइज द कंपेटिटर्स, in which we have first a small study by NFIB, in which they stated that the small business owners believe they operate in highly competitive environment and the level of competition is increasing. That उसमें वो realize कर रहे हैं कि जिस इन्वायरमेंट में जो स्मॉल बिजनेसेस हैं वो ऑपरेट कर रहे हैं, जिनको स्टडी किया गया, दे हैव अ competitive environment and the level of competition is increasing by the day. Yet 97% of all US businesses do not systematically track the progress of their key competitors. So यहाँ पे 97% है, उनको पता है
कि जो है ऑलरेडी वहाँ पे कंपटीशन एग्जिस्ट कर रहा है और वो विद द पैसेज ऑफ टाइम इंक्रीज कर रहा है, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट 97% of all the US businesses do not track their competitors. So it is very much important कि आप इंडस्ट्री में अपने competitors को देखें और आप देखें कि आपके जो डिलीवरेंस ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस है और जो उनका डिलीवरेंस ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस है उसमें कितना गैप रिमेनिंग है या कितना गैप जो है एग्जिस्ट कर रहा है इफ़ यू आर ऑन द लोअर साइड. सो वी विल सी इन टू डिटेल that how are we supposed to analyze our competitors, but first we should see that why it is important. Analyzing the key competitors allow an entrepreneur to avoid surprises from existing competitors, new strategies and tactics, right? कि अगर आपको अपने की competitors का पहले से आइडिया है तो डेफिनेटली you won't get surprised where their next launch of product and service, ठीक है, क्योंकि आप उनको ऑलरेडी स्टडी कर रहे होगे और अपना भी वर्क कर रहे होगे अपनी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को इनोवेट करने के लिए. सो इट वॉन्ट बी अ सरप्राइज फॉर यू. नेक्स्ट वन इज आइडेंटिफाई पोटेंशियल न्यू कंपेटिटर्स एंड द थ्रेट्स दे पोज. So if they are moving toward the next big thing and you think that it can be a threat to your organization, you can do something about it. So it is very much important to keep analyzing your competitors. Next one we have is the improve reaction time to competitors actions. ठीक है, डेफिनेटली हमने स्टार्ट में बात की थी कि we want to avoid surprises, ठीक है, and we can improve. फर्दर इट इज़ रिलेटेड टू इम्प्रूविंग योर रिएक्शन टाइम. अगर आपका कंपेटिटर जो है कोई नेक्स्ट मूव करता है एंड इट इज़ ट्राइंग टू टेक एज अपॉन योर बिजनेस, सो इफ़ यू हैव ऑलरेडी डन योर होमवर्क एंड इफ़ यू हैव ब्रिंग फर्दर इनोवेशन टू योर बिजनेस और यू आर प्लानिंग टू डू so the next move that you will make will have an early reaction, right? So it will be an improved reaction time to your competitors that is already existent. Last one here is anticipate rivals next strategic moves. Definitely if we sum them all up, कि अगर हम अपने rivals को जो हैं consistently observe कर रहे हैं तो बेशक हमें उनका डेफिनेट ना पता लगे कि वो नेक्स्ट मूव क्या करने वाले हैं, लेकिन हमें एक जो जनरल मैग्नीट्यूड ऑफ देयर स्ट्रेटेजिक मूव है वो डेफिनेटली हमें उस चीज़ का पता लग जाता है. सो व्हेन इट कम्स टू एनालाइजिंग कंपेटिटर्स, ये कोई एक अनएथिकल बिहेवियर नहीं है डेफिनेटली, और इसमें काफ़ी ऐसी अप्रोचेज हैं जिनमें हम एथिकली अपने जो कंपेटिटर्स हैं उनको एनालाइज कर सकते हैं. फर्स्ट वन हेयर इज़ मॉनिटर इंडस्ट्री एंड ट्रेड पब्लिकेशंस. डेफिनेटली किसी भी इंडस्ट्री के जो होते हैं अपने एक रजिस्टर्ड पेटेंट्स होते हैं और रजिस्टर्ड जो है पब्लिश्ड पेपर्स होते हैं जिनको आप ऑब्ज़र्व करके उस इंडस्ट्री किस डायरेक्शन में वो जा रही है वो बहुत आराम से आप उसको स्टडी कर सकते हैं और क्रिटिकली एनालाइज कर सकते हैं. टॉक टू कस्टमर्स एंड सप्लायर्स. जो कस्टमर्स एंड सप्लायर्स होते हैं ये डेफिनेटली मल्टीट्यूड ऑफ जो कंपनीज होते हैं उनके साथ एसोसिएटेड होते हैं, क्योंकि जो कंज्यूमर होता है वो जब एक प्रोडक्ट बाय करने जा रहा होता है तो वो डिफरेंट कंपनीज को कंपेयर करके ही फाइनली एक प्रोडक्ट पिक करता है. और लाइक वाइज जो सप्लायर्स होते हैं वो भी मल्टीपल कंपनीज को रॉ मटेरियल्स या अदर नेसेसरी मटेरियल्स जो हैं डेवलपमेंटल मटेरियल जो होते हैं वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं. तो अगर आप इनसे जो है डायरेक्ट कम्युनिकेट करते हैं सो दे कैन एजुकेट यू एज वेल. Next one is regularly debrief employees, especially sales representatives and purchasing agents. So definitely direct communication with your employees is very much important to keep them informed that what's going on in the industry and what you need to do. Next one is the attend trade shows and conferences and study competitors sales literature. Again जो आपके ट्रेड शोज होते हैं उसमें डिफरेंट जो होते हैं कंपेटिटर्स जो होते हैं अंडर वन रूफ जो होते हैं दे आर देयर, सो यू कैन सी देयर प्रोडक्ट्स एंड व्हाट दे आर द प्रोजेक्ट्स दैट दे आर वर्किंग ऑन. लाइकवाइज जो आपकी इंडस्ट्रियल कॉन्फ्रेंसेज होती हैं और जो पब्लिकेशंस होती हैं इन टर्म्स ऑफ सेल्स लिटरेचर, दे कैन बी अ गुड गाइड फॉर व्हाट योर कंपेटिटर्स आर गोइंग टू डू.
Further we have is watch for employment ads from competitors to get an idea about their plan for the future. Definitely जो employment ads आते हैं उसमें उस ऑर्गेनाइजेशन के जो हैं डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं, स्किल सेट्स चाहिए होते हैं उनको, और जो भी एक्सपेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं उनसे, तो उन स्किल सेट्स की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको देख के आप जज कर सकते हो कि ऑन व्हाट टेक्नोलॉजीज दे आर वर्किंग ऑन एंड what magnitude of plans they have for the future. Conduct patent searches for patents competitors have filed. तो नेक्स्ट वन इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट डेफिनेटली, जो हमने रिसर्च पब्लिकेशंस की बात की थी उसमें साथ हमने बात की थी कि आप जो पेटेंट्स फाइल करते हो वो रेगुलेटरी बॉडीज़ जो होती हैं उन्होंने लिस्ट डाउन किए हुए होते हैं. सो इट हेल्प्स यू अलॉट टू गेट एन आइडिया कि जो आपके कंपेटिटर्स हैं वो किंग टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर जो है काम कर रहे हैं. यू कैन गेट अ ब्रॉडर व्यू ऑफ व्हाट दे आर डूइंग. Learn about the kinds of equipment and raw materials competitors are importing. आज लाइकवाइज जो हमने सप्लायर्स की बात की थी, ठीक है, उसमें जो रॉ मटेरियल्स और जो इक्विपमेंट आ रहा होता है, अगर आप उसको स्टडी करो तो आप एक प्रोजेक्शन बता सकते हो कि आपके कंपेटिटर्स किन वेन्यूज़ के ऊपर काम कर रहे हैं. नेक्स्ट वन इज़ दैट बाय कंपेटिटर प्रोडक्ट्स एंड बेंचमार्क देम. सो इट इज़ अगेन अ वेरी गुड अप्रोच कि आप अपने कंपेटिटर्स के जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं आप उनको बाय करो, और जो आपके मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स या सर्विसेज आप डिलीवर कर रहे हो उनके साथ ऑन बेसिस ऑफ डिफरेंट डिफाइंड एरियाज़ आप उनको बेंच मार्क करो, और आप देखो कि कहाँ पे आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है फ्लॉज फेस कर रही है और कहाँ पे आपको कंपेटिटिव एज है. Likewise, further we can get the competitors' credit reports that are often made public as well. That can help us to uh, get an idea about the direction in which our competitors are going. Further, we can check out the reports publicly held. Competitors must file with the SEC, right? यही हमने बात की, जो डिफरेंट पब्लिकेशंस होती हैं वो भी आपकी पब्लिक होती हैं, जो आपकी क्रेडिट रिपोर्ट्स होती हैं वो भी पब्लिक होती हैं आपकी, और डिफरेंट लिटरेचर रिपोर्ट्स होती हैं वो भी आपकी सारी पब्लिक होती हैं. लाइकवाइज SEC के साथ जो कंपेटिटर्स की पब्लिकली हेल्ड रिपोर्ट्स होती हैं आप उनको भी स्टडी कर सकते हैं टू फर्दर गेट एन आइडिया. नेक्स्ट वन इज़ यूज़ द वर्ल्ड वाइड वेब टू लर्न मोर अबाउट योर कंपेटिटर्स. इसमें आप इंटरनेट के ऊपर अपने कंपेटिटर्स की हिस्ट्री पढ़ सकते हैं, जो कस्टमर व्यूज़ ऑनलाइन अवेलेबल हैं आप उनको पढ़ सकते हैं, और जो कंपनी रेटिंग्स हैं उनको आप इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं, और एट द सेम टाइम जो अदर राइवल्स पोटेंशियल राइवल्स हैं उनको भी आप डिग आउट कर सकते हैं. लास्टली वी हैव हियर इज विजिट कंपीटिंग बिजनेसेस टू ऑब्जर्व देयर ऑपरेशंस. दैट इफ़ यू गेट टू हैव एन इंडस्ट्रियल विजिट टू योर कंपेटिटर्स operations, it can be a good educative experience for you as well. So जब आपके पास ये सारी इंफॉर्मेशन आ जाती हैं about your competitors and the organizations and environment you are working in, उसके बाद बहुत इम्पोर्टेंट होता है उस इंफॉर्मेशन को राइटफुली यूटिलाइज करना. यहाँ पे हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है नॉलेज मैनेजमेंट का. So knowledge management is basically defined as the practice of gathering, organizing and disseminating the collective wisdom and experience of a company's employees for the purpose of strengthening its competitive position. अगर आपने जितना भी knowledge gain कर लिया है, अगर आप उसको rightfully organize नहीं करते और सही लोगों तक timely distribute नहीं करते, so it won't be a good knowledge management process or approach, right? So an effective knowledge management approach involves the utilization of the information that you have very much efficiently and further distributing it to the rightful people. So the knowledge management involves taking inventory of special knowledge the people in the company possess, right? What we have just discussed, and then organizing that knowledge and disseminating it to those who need it, right? You have to give it further to the right people at the right time to make the right decisions, otherwise you can face failures. So the next step we have is the creation of company goals and objectives based upon the doing the PESTEL analysis, and then analyzing our competitors, and then translating all those processes into
through the knowledge management process, now we have to create the company goals and objectives, and now we are going to look at what we are going to do. Goals are basically the broad and long range attributes to be that are supposed to be accomplished, right? And when it comes to defining your goals, it should be further breakdown into different objectives, which are more detailed specific targets of performance that are smart. And when we said they are smart, they are specific, they are measurable, they are attainable, they are realistic, yet maybe can be challenging and should be timely as well. So when it comes to creating company goals and objectives, uh, considering the example of a broad goal that we have here is that somebody says that I want to grow my business, but when they say that they are going to grow their business, how can we further translate into specific details, right? But when we are going to specify it, we are going to say that I will acquire 20 new clients for my consulting business, right? It is something that can be said in specified way. Next one is that I will measure my progress by how many new clients I bring on while maintaining my current client base, right? It is something measurable, that how much client base your how much of your client base is increasing by the day, and the more client base you have, the more towards the success, or the broad goal that we have defined here is that your I want to grow my business. So the more client base you will have, the more growth your business will observe. Next one is the aspects of attainable, that I will ask clients for referrals, launch a social media marketing campaign and network with local businesses. So definitely हम ये करने किस तरह जाएंगे, that we will ask our clients for further referrals and we will launch a marketing campaign as well on social media, and then we will further network our with our local businesses as well to enhance our business and achieve the business growth. Next one here is the relevance, and the relevant, how relevant your business goal is. Then it suggests that adding additional clients to my business will allow me to grow my business and increase my revenue, which is very much understood. And when it comes to defining it in terms of time, then we can say that I will have 20 new clients within 6 months, right? It is something that we have now very much defined very specifically, very measurably, and how it can be attained and how it is relevant to the main goal of ours, that is the growing of business or expansion of business, and in how much time we are going to do it. Okay, now that we have seen that what our goals are and what are the associated objectives to it, and how much important they are and how we are going to define them, next one step is the aspect of formulating strategies, right? What a strategy is, a strategy is basically a roadmap of actions an entrepreneur draws up to achieve company's missions, goals and objectives. It is the company's game plan for गेनिंग अ competitive एडवांटेज. अगर हम अपनी स्ट्रेटजीज़ देख लें, स्ट्रेटजीज़ के ऊपर हमने इन डिटेल बात की थी कि हाउ मच इम्पोर्टेंट दे आर. नाउ स्पेसिफिकली जब हम अपनी गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को सामने रखें तो हमारे पास 3 बेसिक टाइप ऑफ स्ट्रेटजीज़ आती हैं जब भी हम किसी मार्केट में इंटर हो रहे होते हैं या इंटर हो चुके होते हैं और हमने फर्दर अपना कंपेटिटिव एज जो है मेंटेन करना होता है या इन्हेंस करना होता है. उसमें सबसे पहले आपके पास आ जाती है कॉस्ट लीडरशिप, नेक्स्ट वन इज़ द डिफ्रेंसिएशन एंड द अदर वन इज़ द फोकस. लाइकवाइज अगर हम इस ग्राफ में देख लें जो हमारी 3 जेनेरिक स्ट्रेटजीज़ हैं, गिवन द टारगेट स्कोप एंड द एडवांटेज दैट वी हैव. अगर टारगेट स्कोप आप देख लें तो आपके पास ये इंडस्ट्री जो है आइदर इट इज़ ब्रॉड, यू हैव ब्रॉड ऑडियंस और यू हैव अ नैरो ऑडियंस. लाइकवाइज जो आपके पास एडवांटेज हैं आप पहले उसको देखते हैं कि आइदर यू हैव अ लो कॉस्ट और एडवांटेज, और यू आर वेरी मच स्किल्ड इन द प्रोडक्ट दैट यू आर डिलीवरिंग एंड योर प्रोडक्ट इज़ वेरी मच यूनिक. तो वो एडवांटेज आपके पास है, ठीक है. सो
हमारे पास अगर ब्रॉड स्कोप हो और लो कॉस्ट एडवांटेज हो, देन वी गो फॉर द कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी. And if we have a broad scope and product uniqueness, then we go for the differentiation strategy. Both of these can also be applied on the narrow segments as well, but we go for the focus strategy here on basis of our low cost and basis of our strategy. Now we are going to look into detail के ये सारे aspects हमारे किस तरह हैं. Cost leadership. The goal of cost leadership is to be low cost producer in the industry or market segment. The low cost leaders have an advantage in reaching buyer to who on basis of price they can have the power to set the industry price floor. ठीक है, ये वो सिचुएशन होती है जिसमें आपके पास इकोनॉमीज ऑफ स्केल का एडवांटेज होता है, जिसमें आपकी जो पर यूनिट कॉस्ट एंड प्रोडक्शन होती है वो काफ़ी ज़्यादा लो होती है और कंपेटिटर्स के मुकाबले में जो है आप सबसे लोएस्ट प्राइस प्रोबेबली दे रहे होते हो मार्केट के अंदर या रेलेवेंट इंडस्ट्री के अंदर. सो यू हैव एट द एंड ऑफ द डे द पावर टू सेट द इंडस्ट्री प्राइस फ्लोर, कि उसमें आप अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को जो है सेट करके जो लीस्ट प्राइस है या जो आपके मोस्ट सूटेबल प्राइस है वो आप सेट कर सकते हो विद इन दैट इंडस्ट्री. इट वर्क्स वेल व्हेन बायर्स आर सेंसिटिव टू प्राइस चेंजेस, कि अगर आपका बायर जो है that has many options and will choose you if you have a good price to offer. So in that case the cost leadership is very effective to be implemented. Next one is the competing firm sells the same commodity products. डेफिनेटली अभी हमने बात की है कि आपके पास काफ़ी ज़्यादा कंपेटिटर्स अवेलेबल हैं उसी प्रोडक्ट के, और जो है ऑन बेसिस ऑफ प्राइस द होल कंपटीशन इज एग्जिस्टिंग. ठीक है, तो जितना आप कंपेटिटिव एज प्राइस की बेस पे दे सकते हो उतना ही ज़्यादा जो कस्टमर्स हैं या क्लाइंट्स हैं वो आपके साथ एसोसिएट करेंगे. एंड डेफिनेटली इट कैन बी ओनली बी अचीव्ड इफ़ यू हैव द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्किल दैट आई जस्ट मेंशन्ड अबव. नेक्स्ट वन हियर इज द एस्पेक्ट ऑफ डिफरेंशिएशन, एंड considering which the company seeks to build customer loyalty by positioning its goods or services in a unique or different fashion, right? That you have some associated uniqueness to your product or service. The idea is to be special at something customer values. तो इसमें जो आपका प्रोडक्ट जो भी आप बिल्ड कर रहे हो उसमें आप बेशक कॉस्ट एडवांटेज नहीं गेन कर पा रहे, लेकिन आपका जो प्रोडक्ट या सर्विस है दैट इज़ वेरी मच यूनिक टू योर कस्टमर, तो उसकी बेस पे जो है आप एज लेते हो मार्केट के अंदर. सो द की आइडिया ऑफ हियर इज दैट बिल्ड bias for differentiation on distinct competence, something that the small company is uniquely good at doing in comparison to its competitors. For example, here the ice hotel. अब आइस होटल स्पेसिफिकली अगर हम बात करें फिनलैंड की, ठीक है, तो वहाँ पे जो है they are offering a room to their clients for the stay of one night at cost of $10,000, right? It's a very high price for any one to pay. ठीक है, और डेफिनेटली जो बाकी होटल्स हैं पूरी दुनिया में उसमें बहुत रेयर ही होंगे जिनकी इतनी हाई प्राइस हो. ठीक है, लेकिन अब आइस होटल जो हैं वो वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस ऑफर करता है. ठीक है, ये होटल जो है वो टोटली आउट ऑफ आइस से बना हुआ है. ठीक है, एंड इट हैज़ वेरी लार्ज रूम्स एंड everything is made out of ice, even the dining area and the chapel that they have over there, and even the movie theater that they have over there, everything is made out of ice, right? और इसकी यूनिक बात यह है कि ये होटल जो है वो हर साल रिकॉन्स्ट्रक्ट होता है. ठीक है, सो डेफिनेटली दे आर bearing too much price on building that hotel, but at the same time because they are very much unique in comparison to their competitors, they are offering unique services to their competitors. On basis of that they are taking competitive advantage, और उसकी बेस पे definitely they are charging as much as they want as well. Okay, next we have here the aspect of focus, and we discussed के जो आपके जो narrow market segments होते हैं
when it comes to dealing them on base of your cost advantage uniqueness of your business, then we go for the focus approach. और इसमें जो है आप एक सिंगल नीश जो होती है किसी भी मार्केट सेगमेंट को जो है टारगेट कर सकते हैं, या मल्टीपल नीशेस को भी एट द सेम टाइम टारगेट कर सकते हैं ऑन बेसिस ऑफ द कॉस्ट और द यूनिकनेस. इसके अगर हम एग्जांपल ले लें रोल्स रॉयस की, तो रोल्स रॉयस इज़ अ वेरी मच फेमस नेम इन द ऑटोमोटिव इंडस्ट्री. और उसकी रीज़न ये नहीं है कि बहुत जो है हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ कार्स जो है पर ईयर जनरेट करते हैं. नथिंग लाइक दैट. दे ओनली मेक सेलेक्टिव कार्स थ्रू आउट द ईयर, बट they have a very unique skill set when it comes to the development of the cars and further delivering it to their customers. तो इनके बहुत ज़्यादा selective customers होते हैं and they have a very specific niche. They have a very narrow market, but based on their uniqueness of the product, based on the advantage of uniqueness, they are earning high profits and they are among the top automotive makers in the industry. Okay, the next step here is the translation of strategies into action plans. That is very much important as well. And in a study by the executives, it was reflected that companies achieved only 63% of results in their strategic plans. तो it comes a question comes into mind के जो बाकी strategic goals है वो कहाँ पे जो है lose हुए. तो definitely we have always talked about the implementation of the right practices, management practices at the right time, and having a strong communication within the organization as well as with the external stakeholders as well, and defining the right strategies and implementing them effectively and efficiently. So definitely there is a lag in either of these areas that result in the decline of achieving the strategic plans and objectives. So the projects are basically defined in terms of their purpose, their scope, their contribution they will have towards the organization or society or the consumers, and next they are defined on basis of the resources that will be required for them and the time that will be required to get them accomplished. So it is very much important that all of these areas are very much specifically defined and are rightfully implemented, because all of these steps are linked with one another, and if there is a lag in one aspect of the project, it will definitely cause a decline in the performance or the achievement of other aspects of the business. So to achieve the optimal results out of your organizational strategies, it is very much important that you establish the accurate controls within an organization, which suggests that plan establishes the standards against which actual performance is measured, right? And so an entrepreneur must identify and track key performance indicators and take corrective actions. तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि जब आप एक प्लान बना लेते हो, आप इतना वर्कआउट कर लेते हो और आप एक स्ट्रेटजीज डिफाइन कर लेते हो और डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के होते हैं उनको आप एक कॉन्फिडेंस पे ले जाते हो, तो आप इन सारे जो और एक इफ़ेक्टिव नॉलेज मैनेजमेंट जो है आप उसको इम्प्लीमेंट कर लेते हो. सो इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि आप जब उन प्रैक्टिसेस को इम्प्लीमेंट करें तो उनके साथ साथ ट्रैक भी करें. ठीक है, कि आपको पता लगे कि डिफरेंट हमारी जो स्टेजेस हैं जो स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की हमने भी डिफ़ाइन की हैं उसमें कहाँ कहाँ पे लैकिंग्स आ रही हैं. ठीक है, उनको अगेंस्ट डिफरेंट जो सेट स्टैंडर्ड्स हैं उनको आप मेजर करें, और उनको इंडिविजुअली मेजर करने का फ़ायदा हमें ये होगा कि उसमें एक इंडिविजुअलिस्टिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम भी हमको पता लग जाएगी, और एट द सेम टाइम वी कैन टेक द रेलिवेंट करेक्टिव एक्शन टू improve it. So that is it for today, in which we further discussed the aspects of the PESTEL analysis and how it can help an organization to evaluate the environment it is working in, and
also see if the organization is overlooking any relevant factors that it should be taken into consideration. And in the second part we discussed about the key success factors of an organization that help an organization to realize its true potential and achieve success in the relevant industry. So that's it for today, and hope to see you guys in the next lecture.